Yeah. Is my display visible? Please confirm me. So this is our continuation of the Yes, LMT sir. sessions. Last time हमने कहाँ तक पढ़ा था? पिछले सेशन में we were done with this मिड डे मील प्रोग्राम. ठीक है, तो we don't have to think so much about the things कि अब एग्जाम आने वाला है और एंजाइटी बढ़ रहा है. बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचना. यू जस्ट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योरसेल्फ. एक दिन सोचना है. इफ टुडे आई एम स्टडिंग, बस आज का सोचना है. कल क्या होगा वो भी नहीं सोचना है. आज मेरा क्या क्या टारगेट है, व्हाट इज माय डू टू चेकलिस्ट, उसमें व्हाट टू डू वाली जो लिस्ट है उसमें आज मेरा क्या क्या. लेट्स से इफ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे है ना 200 क्वेश्चंस करना है, बस इतना सोचना है. कौन सा सब्जेक्ट मुझे, लेट्स से कि अगर आपका सर्जरी चल रहा है, सर्जरी में मुझे क्या क्या करना है, और मैंने आपको क्या सिखाया है, 200 क्वेश्चंस. इफ यू आर एमिंग फॉर 200 क्वेश्चन, लेट्स से कि आइडियली तो आपको 250 क्वेश्चंस करना चाहिए, है ना. इट इज बेस्ट 250 बेस्ट. 200 क्वेश्चन कर रहे हो बेटर, एंड 150 कर रहे हो गुड. बट अगर एक सिनेरियो में बताऊं तो 200 क्वेश्चंस आपको करना ही चाहिए. 200 क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए. उसमें से 100 क्वेश्चन यू शुड बी गोइंग विथ. लेट्स से अगर आपका सर्जरी चल रहा है तो 100 क्वेश्चन आपका सर्जरी होना चाहिए, एंड 100 क्वेश्चन आपका मिक्स बैग होना चाहिए. मिक्स बैग होना चाहिए. दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ऑल्सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो 100 क्वेश्चंस और ये जो 100 क्वेश्चंस हमको वन गो में नहीं करना है कि नहीं चलो ठीक है एक साथ कर लेते. लेट्स से कि अगर आपने 200 क्वेश्चन डिसाइड किया इन अ वन डे, तो 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं. This should further divide into 50 questions, 50 questions, 50 questions and 50 questions. अब ये कब करना है देखो. आप in case if you are taking breaks, if you are taking breaks in mid of your study, let's say अगर आप 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, उस 15 मिनट ब्रेक को एक्सटेंड कर दो 45 मिनट्स में, और वी कैन से लाइक 50 मिनट्स में. ठीक है, ये जो टाइम है, दिस टाइम शुड बी यूटिलाइज फॉर दिस क्वेश्चंस, फॉर दिस क्वेश्चन. सर प्लीज उनको रिव्यू करने का सही तरीका बताओ क्वेश्चन रिव्यू. या आई विल टेल यू आईफोन 13 जस्ट अ सेकंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये ध्यान रखना है कि कैसे हमको क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करना है. ऐसा नहीं है कि वन गो में लेट्स गो फॉर 100 क्वेश्चन एंड देन उसको खत्म करके फिनिश करते हैं. नो, हमको हमारे ब्रेक टाइम जो है, ब्रेक टाइम को हमको यूटिलाइज करना है एट इट बेस्ट, एट इट बेस्ट. और वो कैसे हो सकता है, 15 मिनट्स का ब्रेक लो, 15 मिनट के ब्रेक को 45 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर में आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. उसको एक्सटेंड करके और फिर क्वेश्चन करो. बिलीव मी, आपका जो दिन का, प्लीज प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज प्लीज म्यूट योर माइक. हर्ष नकुम प्लीज म्यूट योर माइक. पारुल, ओम प्रकाश, सिंधुजा प्लीज म्यूट योर माइक गाइस. या थैंक यू. सो दिस इज व्हाट यू डू कि ब्रेक टाइम को यूटिलाइज करना. अदर देन ब्रेक में जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है वो करना है. ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि 100 क्वेश्चन शुड बी माय मिक्स बैग एंड 100 क्वेश्चन शुड बी योर जो भी सब्जेक्ट का आपका रिवीजन चल रहा है. स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रहा हूँ. इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, इफ यू आर डूइंग 200 क्वेश्चन प्लस एड 15 क्वेश्चंस टू 20 क्वेश्चंस, मिनिमम 15 क्वेश्चंस ऑफ मेडिसिन, कोर मेडिसिन. कोर मेडिसिन के 15 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं. ठीक है, कोर 15 क्वेश्चंस आपको मेडिसिन के करने ही करने हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. नाउ इन 15 क्वेश्चंस को आई हैव टू कंसीडर प्लीज 15 topics, 15 topics. So whether this 15 question is asking for 30 minutes, आपका 30 मिनट भी लगता है तब भी चलेगा. Even it is taking you 45 minutes, it will work. But believe me guys, we have to solve 15 topics, not just 15 questions. मैं आपको, can you imagine, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 15 question को अगर 30 minutes भी लगता है, it's fine. 45 minutes लगता है, it's fine. Why? Because I am not just solving 15 questions, I am solving 15 topics. You got this? I want a verbal response. समझ में आई ये चीज? इसको करना चालू करो. If you are not doing this, then please start doing this. It will work like magic for you, especially in case of medicine. We have almost like, let's say कि हम consider करते हैं कि हमारे पास 25 days है और let's say 28 days है. ठीक है, अगर हम डेली 15 क्वेश्चंस करेंगे, 15 क्वेश्चन मतलब 15 टॉपिक्स, और इन 15 टॉपिक्स में से भी लेट्स से अगर हमारे 300 टॉपिक्स कवर होते हैं, 300 टॉपिक्स अगर हमारे कवर होते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, उसमें से अगर हमारे 15 क्वेश्चंस भी अगर रिपीट हो गए एज इट इज उन टॉपिक्स में से, तो हमारे 15 मार्क्स शॉर्ट करेक्ट जाएगा, स्पेशली इन
मेडिसिन, स्पेशली इन मेडिसिन। अब इसमें हमको INI के क्वेश्चन करना है, प्लस हमको नीट PG के करना है, प्लस FMG के क्वेश्चन करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस 15 क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि कैसे मुझे अप्रोच करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमको क्वेश्चन को रिव्यू कैसे करना है। क्वेश्चंस को हमको रिव्यू कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन को रिव्यू कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है। लेट्स से किसी क्वेश्चन में 60% बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, 60% करेक्ट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन होता है विच इज करेक्ट बाय लेट्स से लेस देन 60%, है ना। लेट्स से 40% बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, 30% बच्चे करेक्ट कर रहे हैं, एंड लेट्स से कुछ कुछ क्वेश्चन जिसमें 80% प्लस करेक्ट कर रहे हैं। वहां अब इन 3 क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। देखो, जो क्वेश्चन आपका गलत जाता है, जो कि 80% बच्चों ने करेक्ट किया है, एनी स्टूडेंट्स or any question that is done corrected by more than 80% students, that means वो सबसे मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन है, वो मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन है, बट आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था, दैट्स व्हाई वो आपसे गलत हुआ। दैट इज अ क्राइम, दैट इज अ बिग ब्लंडर। जो क्वेश्चन 80% स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स, 70% स्टूडेंट्स करेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आप वो गलत कर रहे हो, मीन्स उसका एक तो एग्जाम में रिपीट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। वाई? बिकॉज वी बिलीव दैट मोस्ट common things are asked commonly and rare things are asked rarely. So this was a question जो कि most common part में से आया है, but it's me जो मुझे नहीं आता था। So इस पे मुझे फोकस करना है, that is my crime के अभी भी मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन होता है जिसमें 40% 30% बच्चों ने करेक्ट किया, 20% बच्चों ने करेक्ट किया। ठीक है, इन क्वेश्चन को अगर आपको नहीं भी आता है, you have to be relaxed, you have to be relaxed and be happy that you got a new information, you got a new information. This is not a crime, this is not your mistake कि ये मुझे नहीं आता था। अगर आपसे गलत भी हुआ है, that is fine, that is fine. Now when I have to focus कि इसको मुझे याद रखना या नहीं याद रखना, तो should I be happy while looking this question when it is for NEET PG, when it is for NEET PG, as well as even if it is for INI, but it is from your notes, it is from your notes in the sense उस टॉपिक में से आया है, उस टॉपिक में से आया है, जो टॉपिक आपने आपके FMG के नोट्स में है उससे क्वेश्चन आया है, देन यस आई शुड बी हैप्पी कि चलो ये क्वेश्चन मुझे दिख गया, इट इज एटलीस्ट फ्रॉम माय नोट्स के नोट्स में से जो टॉपिक्स मैंने पढ़े उसका क्वेश्चन है। देन आई हैव टू बी हैप्पी कि चलो ये भी एक पॉसिबल नया क्वेश्चन FMG में आ सकता है, इसलिए मुझे इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है, इस इंफॉर्मेशन को मुझे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लेट्स से कि अगर आपको ये क्वेश्चन ना नीट PG ना INI किसी में नहीं आया है, या फिर अगर उसमें आया हुआ भी है बट इट इज नॉट फ्रॉम योर नोट्स, नॉट फ्रॉम योर टॉपिक जो आपने पढ़ा है, देन यू हैव टू बी वेरी हैप्पीली नेग्लेक्टिंग, उस क्वेश्चन को अच्छे से स्माइल करके जस्ट नेग्लेक्टेड। फोमो में नहीं रहना है कि यार ये पूछ लिया तो, अगर ये पूछ लिया तो, अगर वो पूछ भी लेंगे तब भी यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर इन दैट एग्जाम। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू रन आफ्टर रेयर क्वेश्चन, आई वांट टू रन फॉर कॉमन क्वेश्चन। ये समझ में आए? नेक्स्ट चीज यू हैव टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन कि 60% या फिर 50% या फिर 70% बच्चे जो करेक्ट कर रहे हैं उसमें आई हैव टू बी लिटिल लाइक फेयर रहना है मुझे कि यार दिस मस्ट बी बिकॉज ऑफ योर सिली मिस्टेक, दिस मस्ट बी बिकॉज ऑफ योर सिली मिस्टेक। या तो आपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, और ये क्वेश्चन जो होते हैं दिस क्वेश्चन आर रिजल्ट डिसाइडर, दिस क्वेश्चन आर रिजल्ट डिसाइडर। जो 60% बच्चे जो करेक्ट करते हैं और वो अगर आप गलत करते हो, दीज आर रिजल्ट डिसाइडर, दीज आर रिजल्ट डिसाइडर। ठीक है, यहीं से ही बच्चा जो है वो 149 148 147 लेट से 142 जैसे 142 तक की रेंज में रहता है। दिस आर द रिजल्ट डिसाइडर्स, वेरी 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 वल्नरेबल पॉइंट्स। तो एक ये चीज समझ में आई आप लोगों को? आई वांट अ वर्बल रिस्पॉन्स फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, आई वांट अ वर्बल रिस्पॉन्स। ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर हुई? व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस थिंग्स, सो दैट आपके दिमाग में इनकलकेट हो ये चीजें एंड यू विल definitely follow these things. I want a verbal response from each one of you, not just in chat. I want a verbal response if you are not in library. I think most of you guys are in library. Okay, I can see Yes, your sir. responses. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, Yes, sir. We are here. great. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है लाइक सर हैशटैग कौन सा यूज करना है, देन
देन व्हाट यू हैव टू डू, एटलीस्ट देखो सब बताते हैं कि एटलीस्ट पीवाईक्यू वाला लाइक नीट पीजी आई सी गाइस, इफ यू हैव मैरो और प्रेप लेटर, ठीक है, एनी क्वेश्चन बैंक यू हैव, एनी क्वेश्चन बैंक यू, आप जो भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो, इट डजंट मैटर, बट आपको क्या करना है, अभी आप एफएमजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन करते हो, राइट राइट, एफएमजी वाले सेक्शन से क्वेश्चन करते हो, नाउ प्लीज शिफ्ट योर मैरो टू दिस नीट पीजी वाला, जस्ट फॉर सम क्वेश्चंस, एटलीस्ट फॉर नीट पीजी के कुछ पीवाईक्यूज अगर आपको सॉल्व करना है, रेदर ऑन डिपेंडिंग ऑन जस्ट एफएमजी वाले सेक्शन, स्विच योर मैरो टू नीट पीजी वाले क्वेश्चन बैंक के सेक्शन में, एंड देन मैं कस्टम मॉड्यूल ऑन हैशटैग नीट पीजी वाले कस्टम मॉड्यूल से क्वेश्चन करना, उस पे जो लैंग्वेज आती है, और उस पे जो ऑप्शंस आते हैं, दैट यू हैव टू फोकस, यू विल फाइंड सम मोर न्यू क्वेश्चंस, जो कि एफएमजी वाले सेक्शन में नहीं थे, बट दैट वाज इन मेरो के सेक्शन में, उसका जो क्वेश्चन आता है दैट इज मच रियलिस्टिक, दैट इज मच रिलेवेंट टू एग्जाम के पैटर्न को जानने के लिए, इफ यू आस्क मी, किसी ने एक्सपीरियंस किया है, किसी ने एक्सपीरियंस किया है? यस, so this actually works, yeah Hemant, good evening, ठीक है, so this is what you have to focus, now let's start with our lecture, so first of all we will study about this reference Indian men and women के कुछ क्राइटेरिया हम याद करेंगे, देखो these are usually based on age, weight, BMI and this weight to health percentile, first of all मुझे याद रखना है, रेफरेंस इंडिया मेन एंड वुमन का एज क्या होगा, इट विल बी अराउंड फ्रॉम 19 टू 39 ईयर, 19 to 39 year, if they ask you for weight, please remember 65 kg for man, 55 kg for woman, BMI में याद करूंगा 18.5 to 22.99, 18.5 to 22.99, I am hoping most of you guys are with your scribble copy or with your rough copy, actively write please, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज मैं आपको याद करवाने वाला हूँ, it will demand your scribble copy, it will not just कि हाँ ठीक है मैं लेक्चर देख रहा हूँ, no, please keep a scribble copy with you or at least a rough paper or rough copy so that you can write this information, ठीक है, and for weight to health percentile 95th percentile, ठीक है, next we have to remember about this RDA, what do you mean by RDA, RDA means recommended dietary allowance, means daily requirement, first question they will ask you that कितनी पॉपुलेशन को इसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस आरडीए एक्चुअली सेटिस्फाइज नीड्स ऑफ 97.5% population, 97.5% population, also you have to remember about this, what it actually serves, it serves its actual requirement plus some extra, इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली अगर मैं आयरन की बात करूं, यूजुअली अगर मैं, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, यूजुअली अगर मैं आयरन की बात करूं, तो डेली रिक्वायरमेंट पर डे की आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, फ्रॉम 1 to 2 mg पर डे, फ्रॉम 1 to 2 मिलीग्राम पर डे का आयरन का रिक्वायरमेंट है, इतना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, इतना एब्जॉर्ब होता है, बट होता क्या है, वी आर एक्चुअली गिविंग दिस 19 मिलीग्राम पर डे, देखो एब्जॉर्ब कितना होता है, और वी कैन से रिक्वायरमेंट जो बॉडी को है वो कितना है, 1 to 2 मिलीग्राम पर डे, बट हम कंज्यूम कितना करते हैं, 19 मिलीग्राम पर डे, वाई, तो यू कैन सी, क्योंकि एब्जॉर्ब कम हो रहा है, तो हम एक्चुअल रिक्वायरमेंट तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी देते हैं, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, अच्छा, तो आयरन भी हम एक्चुअल रिक्वायरमेंट प्लस कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, सेम गोज विद फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, आयोडीन एंड विटामिन डी, ठीक है, बट ऐसी कौन सी चीज है जो हम जितना चाहिए उतना ही देते हैं, ओनली दैट रिक्वायर्ड, कितनी रिक्वायर्ड उतना ही देते हैं, दैट इज योर एनर्जी, सो अदर देन एनर्जी वी गिव समथिंग एक्स्ट्रा लाइक आयरन, फॉलिक एसिड और जितने भी मैंने आपको बताया, बट एक्सेप्ट एनर्जी जितना चाहिए उतना ही हम देते हैं, उतना ही किलो कैलोरीज में देते हैं, वाई, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी देयर, then obviously it will be converted into or accumulated as fat, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बीन आस्क्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीज सबको समझ में आई, if this is very very clear with you, then you have to remember, just a second.
Yeah, if this is very clear to you, then just a second. Yeah, if this is very clear to you, then we have to move on लर्निंग दिस. तो देखो हमको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, आयोडीन, विटामिन डी. अगर आपको ये याद नहीं है तो आई टेल यू हाउ टू लर्न दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू रिमेंबर, देखो मैन, वुमन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग, जस्ट बी वेरी क्विक विद मी एंड फॉलो करना मुझे. सो वी हैव दिस आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए, आयोडीन एंड विटामिन डी. देखो आयरन यू हैव टू रिमेंबर 1, 2, 9, 9. ठीक है, 19 and 29. फ्री है 19 milligram per day should be for men मैं लिंक and 29 milligram for woman. For folic acid को एक बार मैं भूल जाता हूँ. I don't have to remember about नहीं folic विवेक acid. जान सर पढ़ा रहे ठीक है. और ये अपने को. She doesn't go to school. Dr. Vivek Raj Chaudhary, please mute your mic. Dr. Vivek, please mute your mic. Endoxin ecclesia, please mute your mic. Yeah. Next we have to remember about calcium. देखो calcium can be remember, calcium को हम कैसे verbally बोलते हैं? calcium का K, that is 1K. So please remember it as 1000 milligram per day. 1000 milligram per day. Same with male. अगर मैं woman की बात करूँ तो it is also 1K. That is 1000. And for pregnancy it is also 1K. That is 1000. And for lactation please remember 1.2K. ठीक है. Now it is vitamin A. अब vitamin A यानी कि 1K can be transferred over here also, that is 1K. तो यानी vitamin A का भी कितना हो जाएगा माइक्रोग्राम पर डे? vitamin A का that is also 1000. You just have to remember for man. And then we have to remember for iodine. Iodine is very very easy to remember. देखो iodine को कैसे याद रखेंगे? 1 1 2 2 5 5 5 5. लेट्स 5 को हम 8 बना देते हैं, that will be 28. नाउ जस्ट यू टू पुट 0 0 0 0. सो इससे हमको याद हो जाएगा मेन को आयोडीन कितना चाहिए, दैट इज 150 माइक्रोग्राम. वुमन को कितना चाहिए? 150 माइक्रोग्राम. अबाउट प्रेगनेंसी में कितना आयोडीन चाहिए? 250 माइक्रोग्राम. और अल्टीमेटली लैक्टेशन में कितना चाहिए? 280 माइक्रोग्राम. अबाउट विटामिन डी इट्स ऑल 600 600 600. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर. I'll repeat again for you, like we just have to remember like this way. ठीक है, this is the easiest way to remember. 1299. So it will be your iron for male and for woman. ठीक है, अगर आपको फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल का याद रखना, इट विल बी 40 एंड लैक्टेशनल फीमेल का याद रखना 23. फॉलिक एसिड का नहीं भी याद करोगे इट विल वर्क. फॉर कैल्शियम का कैल्शियम दैट इज के, तो दैट इज 1K 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 एंड 1.2K. ठीक है, दिस इज व्हाट यू टू, यानी कि 1200 फॉर लैक्टेशनल फीमेल. ठीक है, एंड दिस फॉर विटामिन है जस्ट शिफ्ट दिस 1K ओवर हियर. तो ये भी आपको याद हो जाएगा. अबाउट आयोडीन मैंने कैसे याद करवाया? 1 1 1 2 2. देन पुट 5 5 5 एंड 5 5 को 8 बना दो and then 0 0 0. It मेरा will ना मतलब work for you, believe me. And then vitamin थोड़ा ठंड से D is एलर्जी होती है तो 600. ये वाली क्लास चल रही है. दीप्ति प्लीज म्यूट योर माइक. आई डोंट नो व्हाई टुडे आज ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने बच्चे मतलब अनम्यूट रखे हैं माइक को. ऐसा लाइक पहले कभी नहीं हुआ कि इतना म्यूट. लाइक व्हाई यू गाइस आर, anyways leave it. Yeah, so where were we? So this is the way you have to learn this. Next we have to remember about this फ्लोरीन. वेरी 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 हेल्दी. देखो ये सबको क्लियर हुआ कि आयरन मुझे कैसे याद रखना है, फॉलिक एसिड मुझे कैसे याद रखना है. देखो फॉलिक एसिड इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट जो हाईलाइटेड वंस है वो आपको याद रखना है. सबको समझ में आया कि कैसे आई हैव टू रिमेंबर? समझ में आया? ओके. नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट फ्लोरीन. देखो फ्लोरीन को लेके प्लीज प्लीज रिमेंबर दैट फ्लोरीन इज कॉल्ड एज लाइक डबल एज स्वॉर्ड. डबल एज स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर इसका लेवल लाइक 0.5 से कम हुआ या फिर 0.8 से ज्यादा हुआ, दिस बोथ विल कॉज प्रॉब्लम. लाइक इट्स की फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से भी प्रॉब्लम होगा, फ्लोरीन के एक्सेस से भी प्रॉब्लम होगा. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द फ्लोरीन का लेवल इज लेस देन 0.5, प्लीज रिमेंबर कि इसमें फ्लोरीन को हम कैसे मेजर करेंगे? mg पर लीटर. नाउ ओवर हियर प्लीज रिमेंबर दैट दिस mg पर लीटर कैन आल्सो बी रिटन एज ppm दैट इज पार्ट्स पर मिलियन. तो अगर एग्जाम में वो mg पर लीटर को अगर वो ppm लिखते हैं,
then also you have to assume it as a same, ठीक है? So that's what you have to remember. It's 0.5 ppm say 0.8 ppm. This is what you have to remember. This is what you have to remember. So it's a double edge sword. अच्छा, अगर 0.5 से कम हुआ, अगर 0.5 से कम हुआ फ्लोरीन का लेवल, it will cause dental caries. This is what I have to remember. First thing. Second thing, अब देखो डेंटल केरीज पे आपसे वो पूछेंगे कि कौन सी लोकेशन पे. प्लीज 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 रिमेंबर, एवरीवन राइट इन द चैट सेक्शन अबाउट दिस, कि क्या डेंटल कैरीज का लोकेशन क्या होगा. इट विल बी अपर सेंट्रल इंसाइजर मोर देन फर्स्ट मोलर. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन क्या होगा, योर अपर सेंट्रल इंसाइजर्स. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग, फर्स्ट चेंजेस इज यूजुअली सीन इन द टीथ व्हेन द लेवल्स आर लेस देन 0.5. ठीक है, अगर लेवल, इफ द लेवल इज 0.8 से अगर ज्यादा हुआ, अगर लेवल 0.8 mg पर लीटर से ज्यादा हुआ तो क्या होगा. लेट्स से इफ द लेवल इज मोर देन 0.8, अगर कितना होता है, लेट्स से कि 1.5 mg पर लीटर, 1.5 mg पर लीटर पे डेंटल फ्लोरोसिस. अच्छा, स्केलेटल फ्लोरोसिस at 3 to 6 mg per liter, at 3 to 6 mg per liter. And for this crippling fluorosis is more than 10 mg per liter. These are already PYQs asked multiple times tested in our exam. Please focus on this. So you have to remember this. Dental fluorosis, again I am repeating, the story will start from 1.5, then it will be from 3 to 6, and then more than 10. 1.5 की स्टोरी में याद रखना, इट विल बी डेंटल फ्लोरोसिस. 3 to 6 में मुझे याद रखना है दिस इज स्केलेटल फ्लोरोसिस. इन मोर देन 10 इट विल बी माय क्रिपलिंग फ्लोरोसिस. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. वेरी 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 हाईलाइटिंग इंफॉर्मेशन. एंड प्लीज रिमेंबर कि अगर 0.8 से कम होता है, दैट इज, अगर 0.5 से कम होता है तो इट विल बी माय डेंटल कैरीज. ठीक है, तो हु गोना रिस्पॉन्स, आई वांट अ वर्बल रिस्पॉन्स. कौन इसको वर्बली रिस्पॉन्स करेगा? शीतल, would you like to? Yes, sir. Please. For dental fluorosis, it is 1.5 milligram per liter. Skeletal fluorosis 3 to 6 milligram per liter, and for crippling fluorosis more than 10 milligram per liter. ठीक है, and what about if the levels are like less than 0? Less than 0.5, it will dental caries. Okay, और लोकेशन क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन Upper साइड क्या रहेगा? central incisors. ओके, ग्रेट. सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया. सो यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर सम fluorine. These changes are due to fluorine. This is what you have to remember as a visual question. ठीक है. Next, I would like to talk about some energy requirements. देखो, energy requirements is also very easy to remember. Please focus that it is usually in kilocalorie per day. So we have three situations: sedentary, moderate and heavy. तो एक्टिविटी के बेसिस पे sedentary activity, moderate activity और heavy activity. So like for example, if I talk about for men and for women, तो sedentary lifestyle में आपको याद रखना है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना होगा, 2100 kilocalorie per day. And for women, for sedentary life, it will be 1700. For moderate activity, please remember, it is like 2700. So you just have to add 1000 kilocalorie over here, तो ये हो जाएगा. ठीक है, एंड ओवर हियर फॉर वुमन यू जस्ट हैव टू, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. इसमें याद रखना है कि आई जस्ट हैव टू ऐड ऑन 1000. एंड ओवर हियर आल्सो प्लीज रिमेंबर, this 2700 will be shifted over here to the woman, and this will be 3500. तो ये आपको याद रखना है. For heavy activity, men should require, like it's usually required energy कितना होगा, 3500 kilocalorie per day, and for women 2700 kilocalorie per day. ठीक है, so this is about energy. If I talk about protein requirement, देखो protein requirement में आपको याद रखना है, it is nearly same for male and for female. For male and for female it's same. और ये किस में हम मेजर करते हैं, ग्राम पर केजी पर डे. लेट्स से अगर प्रिसाइजली वो आपसे पूछे तो प्लीज रिमेंबर इट्स 0.83 ग्राम पर केजी पर डे. इफ दिस इज नॉट इन द ऑप्शन, देन यू हैव टू प्रिफर 1. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिफर. नेक्स्ट प्लीज रिमेंबर अबाउट इन्फेंट की अगर एनर्जी के लिए आपसे पूछे तो प्लीज रिमेंबर, लाइक एन इन्फेंट, so we have to 0 to 6 month and 6 to 12 month. For 0 to 2 month, please remember 550, 670. कैसे याद करेंगे? 5
5, then 6 7 0 0, 550 for 0 to 6 month का infant and 670 for 6 to 12 month of infant. ये याद हुआ, ठीक है. अबाउट प्रेगनेंसी, देखो प्रेगनेंसी में इतना एडिशनल हमको चाहिए, इतना हमको एडिशनल चाहिए, लाइक 1700 प्लस 350 फॉर सेडेंट्री, देन 1700 सॉरी फॉर 2100, अगर मॉडरेट एक्टिविटी के लिए पूछे 2100 प्लस 350 विल बी फॉर मॉडरेट. और अगर आपसे हेवी एक्टिविटी, अगर वुमन प्रेग्नेंट है तो पूछेंगे तो इट विल बी 27 प्लस 350. सो दैट इज योर हेवी एक्टिविटी के लिए. तो दिस विल बी फॉर योर प्रेग्नेंट. इट विल बी प्लस 600. तो जो भी एक्टिविटी होगी उसमें हम ये प्लस कर देंगे, प्लस 600. दिस इज फॉर योर 0 to 6 मंथ फॉर लैक्टेशन. और अगर फॉर लैक्टेशन पीरियड फ्रॉम 6 to 12 मंथ में अगर आपसे पूछेंगे एडिशनल कितनी कैलोरीज चाहिए, if the activity is let's say moderate activity है, then I have to add 1200 plus 520 in this month range. तो ये हमारा हो जाएगा for moderate activity. ठीक है, समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को कि what I have to remember about this energy requirement, energy requirement. So this is the values you have to revise, very very important. And definitely they will ask you for pregnant woman का वो पूछेंगे, and they will ask you for maybe moderate or for heavy, and you just have to add on these things, add on these things. ठीक है. So this was for your gram per kg per day. अच्छा, for protein if they ask you how much protein is required in gram per day, कितना ग्राम एक दिन में एक एडल्ट मेल और एक एडल्ट वुमन को कंज्यूम करना चाहिए. फॉर मेल प्लीज रिमेंबर इट इज 54 ग्राम पर डे, एंड फॉर फीमेल it is 45 gram per day. It is 45 gram per day. This is what you have to remember. Hakimuddin, please mute your mic. Endoxin, please mute your mic. Yeah. So this is what you have to remember. So I'll give a 1 minute quick break. Please revise this. Please revise this. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Are you getting? Are you guys getting? Please इसको revise करो. Revise this, this and this. My speed is fine. Okay, great. Yes. So I'm giving you one healthy break. Please revise it, and then we'll move forward to this food adulteration. Food adulteration. इसको अच्छे से revise करो फटाफट, and then we'll move forward. Excuse me, sir. So now we will start with this food adulteration. Food adulteration. देखो, about food adulteration, first of all we have to be very focused कि अच्छा diseases कौन सी है, टॉक्सिन क्या है, एडल्ट्रेंट क्या है, एंड फूड आइटम क्या है. देखो, usually when you will not revise these things until unless that will not be very frequent on your fingertips. तो आपको रिवाइज करना है इसको अच्छे से, ठीक है. So for disease we have this letharism, this epidemic dropsy, endemic ascites, ergotism, and aflatoxicosis. Whatever is highlighted over here is a question. I know कि आपने इसको पढ़ा होगा, but still it's a quick revision. जो भी आप मिस करते हो या कंफ्यूज होते हो, you have to master it. लेथारिज्म में टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन इज बोआ, दैट इज बीटा ऑक्सिलर अमाइनो एलिनिन. This is what you have to remember. Please remember adulterant is खेसरी दाल, and for food item it is अरहर दाल. So अरहर दाल is a food item और adulterant क्या है? खेसरी दाल. Don't mix it up. Don't mix it up. ठीक है, तो आपको वाइस वर्सा में याद नहीं रखना है. It is food item is अरहर दाल and adulterant is खेसरी दाल. They usually ask the toxin that is boa, and disease it causes is लेथारिज्म. लेथारिज्म पे और क्या क्वेश्चन आ सकता है?
और पॉसिबल क्वेश्चन क्या है, देखो लेथाइरिज्म पे यू रिमेंबर वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लेथाइरिज्म, या तो एक न्यूरोलेथाइरिज्म होता है और एक ऑस्ट्रोलेथाइरिज्म. दिस न्यूरोलेथाइरिज्म यूजुअली इन द ह्यूमंस and this osteoletharism is usually in the animals. We all being humans, so we will read about this न्यूरोलिथाइरिज्म. देखो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. अच्छा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में मुझे क्या याद रखना है कि मैंने पहले भी पढ़ा था विटामिन सी इज यूज्ड एज अ प्रोफाइलैक्सिस फॉर दिस लेथाइरिज्म. ठीक है, एक याद है मुझे. दूसरा और क्या पॉसिबल है, आई वुड रिमेंबर. अच्छा, वी कैन ऑल्सो रिमूव दिस टॉक्सिन. कैसे रिमूव कर सकते हो टॉक्सिन को, एक तो पार बॉइलिंग से मैं रिमूव कर सकता हूँ, एंड ऑल्सो आई कैन रिमूव फ्रॉम दिस स्टिपिंग मेथड. ऑल्सो आई कैन बैन द क्रॉप, and also I can aware by giving this health education. ये मेरा समझ में आया. Next I have to remember that there are some stages in this letharism. No stick stage, one stick stage, two stick stage and crawler stage. ठीक है, स्टेज के बस आपको नाम पता रखना है, and also you should recognize it when they are giving you some visual question. So this is a case of neuroletharism. It is one stick and it is two stick. This is two stick stage. This is what you have to remember. So far so about this letharism, very very important. These highlighted points are question, and please remember we can remove this toxin by parboiling steeping method. ठीक है. Next question we have to remember about this एपिडेमिक ड्रॉपसी. एपिडेमिक ड्रॉपसी, कभी भी अगर आप कंफ्यूज होते हो एपिडेमिक ड्रॉपसी या एंडेमिक एसाइटिस में, you just have to follow one thing. अच्छा, epidemic dropsy, it means has drop, oil has a drop, oil has a drop. So over here arginine oil and this mustard oil. अच्छा, mustard oil is my food item and adulterant will be arginine oil. This is oil and this is oil. This is what you have to remember, arginine oil and mustard oil. ऑयल किसका होता है, मतलब ड्रॉप किसका होता है, ऑयल का. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. एंड इसमें टॉक्सिन क्या रहेगा, संगुइनेरिन. दिस विल बी माय टॉक्सिन. अच्छा, एपिडेमिक ड्रॉपसी का क्वेश्चन वो कैसे फ्रेम करके देंगे, दे विल डेफिनेटली गिव यू सम information related to this edema. Obviously they will tell you some ocular problem that is usually glaucoma, and also there can be a case of CHF and also ultimately death. कैसे याद रखेंगे, एपिडेमिक, E means edema, E means eyes के अंदर glaucoma होता है. This is the way to remember. Also D means death and this O can be written as heart, so congestive heart failure. तो this will be your question. ठीक है, ये एक अच्छे से फ्रेम बना के देंगे, क्लिनिकल केस, एंड दे विल आस्क यू मेंशनिंग आउट दिस hints. Okay, also you have to remember कि mechanism of action पे भी वो पूछ सकता है, how this sanguinary actually act. So I have to remember it acts by inhibiting this pyruvic acid oxidation. Also they will ask you which is the most sensitive test for this epidemic dropsy. It will be पेपर क्रोमेटोग्राफी. आप लोगों ने क्वेश्चन देखा है इस पे क्वेश्चन देखा, आई वांट अ वर्बल रिस्पांस. क्वेश्चन देखा है जिस पे अभी मैंने क्यों लिखा है, these are all recent NEET PG questions, very high link. ठीक है, so you cannot miss on this points. Also you have to remember that. अब let's move forward on this endemic ascites. अच्छा, endemic ascites में please remember usually food item is food dishes, adulterant is protolaria, and over here toxin is usually asked, it is your pyrrolidine and alkaloids. This is what you have to remember. ठीक है. And about ergotism, the toxin will be obviously this ergot toxin. Adulterant usually they ask, it is claviceps. And food items will be a cereal grains. This is what you have to remember. Ergotism का adulterant क्या होगा, adulterant ergotism का, ergotism का adulterant क्या होगा, claviceps. Very good. About aflatoxicosis is a disease. Toxin is aflatoxin. तो ये तो नहीं पूछेंगे. They will ask you the adulterant. That is aspergillus. And very important, food item will be contaminated groundnuts. About ergotism, you have to remember one more thing, that home based
test to identify ergotism is by using 20% salt solution. 20% salt solution. Why? Because it also helps to separate the ergot from this cereal grains. Cereal grains. This is what you have to remember about food adulterant. Food adulterant. ठीक है. Next question वो क्या पूछ सकते हैं इस बार? They will ask you about this adaptation of a new idea or a practice. Adaptation of a new idea and practice. So they will ask you this sequence. They will ask you this sequence very, very, very highly. Next question किस पे आ सकता है? They can ask you sequence on this adaptation of a new idea. So about adopting a new idea, first of all, there has to be some awareness. ठीक है. Awareness के बाद the public should take interest, then evaluation, then trial, and then adaptation. Like for example, hand washing. So this is the best example to understand this. So please, how you can remember this? Through this ITA. A for your awareness के बाद में public interest लेगी, then they will evaluate, and then they will also try, and then they will adopt. So this is what you have to remember. So question आएगा तो you have to be very, very, very focused कि सीक्वेंस क्या रहेगा? आइटा. ठीक है, तो याद रखना अवेयरनेस, इंटरेस्ट, दिस इवेल्युएशन, टी फॉर ट्रायल, ए फॉर एडाप्टेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन about health education and health propaganda. देखो, about health education and health propaganda you have to be very, very specific while giving this difference. देखो, health education में it is a scientific, health propaganda is not scientific. Also, health education promote skill development. It promotes skill development, and also thought process is present. But these are based on emotions. About health propaganda के बारे में अगर मैं बात करूं, it is not at all scientific. It is just to sell product by advertising. Like for example, memory enhancing pills. अब memory enhancing pills से memory enhance नहीं होती, but this is a way to sell the product. So this is something a health propaganda. Height increase product, ठीक है, like complaint, उससे कोई height नहीं बढ़ती. So this is just something a sell product by advertising. Also fairness creams. Obviously you guys can correlate with these things, but what you have to remember, it is health education is scientific. This health propaganda is not at all scientific. Health education thought process present, health propaganda thought process absent. But health education and health propaganda, this both are based on emotions. तो यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आया, this all are technical words. They cannot change these technical words. These technical words. So this you have to be very focused. You can pick these words from the question. और जब आप क्वेश्चन में ये वर्ड्स पिक करोगे, definitely you will be able to mark it correct. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. ठीक है. Next question they will ask you related to this air. Please remember, this is your kata thermometer. First of all, earlier it was used for cooling power, but now very, very, very highly it is used for low air velocity. It is not high air velocity, it's low air velocity. ठीक है. Please remember, very, very, very important, it is low air velocity. This anemometer, please, it is for air velocity, just air velocity. If they ask you about the sling psychrometer, please remember it is for air humidity. So this is your sling psychrometer. अब कैसे याद रखें कोई भी चीज? sling means ऐसे movable. तो you please remember this, it is also sling swing, थोड़ा सा सेम लगता है. ठीक है. तो this is how you have to remember that this is something a handle and you swing करेगा, ऐसे याद रख सकते हो. ठीक है. So it is sling psychrometer. Also this hygrometer is also used for air humidity. ठीक है. And wind vane for air direction. कुछ याद नहीं रख सकते हो, इन दोनों को कभी नहीं भूलना है. Very, very, very holding this sling psychrometer, hygrometer for air humidity, Carter thermometer for low air velocity. Again I am telling, it's not high, it's just low air velocity. ठीक है. Now about this air, per capita air कितना चाहिए? From 1000 to 1200 feet cube per hour. ठीक है. Cubic feet per hour. This is what you have to remember. First question. Next question वो आपसे पूछ सकते हैं about air changes और air changes per hour living room.
then you have to remember 2 to 3 hours, 2 to 3 per hour, 2 to 3 per hour. This is what you know. And next, very very important, highlighting the related information about air, exhaust ventilation and plenum ventilation. देखो, you have to remember about this air ventilation, this exhaust ventilation का मतलब क्या होता है? This pushes older air out of the room. तो जो भी रूम की older air है, ठीक है, उसको वो बाहर की तरफ क्या करेगा? पुश करेगा. So this will be a exhaust ventilation. Then we also have this plenum ventilation. Plenum ventilation क्या होता है? It pushes fresh air in the room, fresh air in the room. Now just tell me, if these both are present, if both are present, obviously fresh air अंदर आता रहेगा, older air बाहर जाता रहेगा. So this will be called as balanced ventilation. Balanced ventilation. देखो, मैं आपको बस टॉपिक्स के नाम तो हमने ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस रिवीजन सेशंस, दिस, ताकि आपको उन टॉपिक के नाम से नहीं, उसमें और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो आई एम कवरिंग एंटायर दोस थिंग कि आप पीएसएम में, एटलीस्ट पीएसएम में आपको किसी भी पॉइंट पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. देखो, मैंने आपको समर्पित बैच में पूरा पीएसएम पढ़ा है, पूरा. आई हैवंट लेफ्ट एनी टॉपिक, एनी चैप्टर, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा पीएसएम पढ़ा है. नाउ आफ्टर दैट, उसमें से भी आपको क्या हाई यील्डिंग लेके जाना है एटलीस्ट एग्जाम तक. ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, बट उसमें से भी क्या क्या पॉसिबल चाहिए. सो दिस टॉप 50 प्लस टॉपिक्स विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम. डेफिनेटली अगर आप इनको मास्टर करते हो, यू कैन सिक्योर योर सीट फॉर दिस FMGE एग्जाम. मतलब कितना भी परसेंटेज रिजल्ट है, वेदर इट इज 5%, 10%, 15%, 20%, नेवरदलेस उसमें से एक, भले 1% रिजल्ट आता है, उस 1% में भी हम रहे. दिस एटीट्यूड यू शुड कैरी टिल एग्जाम. ठीक है. सो इफ यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी 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 like thorough with your study, very consistent, very honest with your study, believe me, Almighty is also looking at all of you. डेफिनेटली आप लोग पास करोगे. ठीक है. सो हमारी तरफ से जो बेस्ट हो रहा है, वी गाइस आर डूइंग फॉर यू. नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अस द रिजल्ट्स. ठीक है. ओवर हियर नेक्स्ट वी विल गो फॉर दिस इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन में एक क्वेश्चन आता है, इट इज मॉनिटर्ड बाय CPCB. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPCB? What is the full form of CPCB? I want a verbal response. Dr. Vivek, would you like to give answer? Harsh, what is the full form of CPCB? Central Pollution Control Board. Very good. Central Pollution Control Board. ठीक है. इसमें कौन कौन सी गैसेस we can use? SO2, NO2, carbon monoxide, SPM, air pollution index, soiling index, coefficient of haze. But do I have to remember all? No. याद क्या मुझे रखना है? ओवरऑल बेस्ट इंडिकेटर अगर आपसे पूछे, SO2. बेस्ट केमिकल इंडिकेटर आपसे पूछे, SO2. इफ दे आस्क यू बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर, बी हैप्पी टू लर्न दिस लाइकेंस, बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू, इफ दे आस्क इन कॉम्बिनेशन, कि अच्छा कॉम्बिनेशन में बताओ, यानी कि 3 कॉम्बिनेशंस वो बना के देंगे आपको एज एन ऑप्शंस, एंड देन आई हैव टू चूज वन. So with the best combination you have to choose SO2, SPM, smoke. तीनों S से start होंगे. It is not soiling index. This is what you have to remember. So SO2, SPM, smoke. This is what you have to remember if they ask in the combination. ठीक है, ये हमारा हो गया. ठीक है. एयर सबको समझ में आया? एयर से क्वेश्चन हम गलत नहीं होना चाहिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वाटर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एयर. बट वाटर के लिए इफ यू लुक एट माय वीडियो सेक्शन, जो हमने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो सेक्शन है, उसमें वाटर का मैंने अलग से वीडियो डाला है. सो यू कैन वॉच दैट. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. तो वाटर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है, क्लोरोस्कोप, जितना कितना हमको ब्लीचिंग पाउडर में कितना परसेंटेज, जितने भी क्लोरीन एस्टिमेशन के लिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे उस वीडियो में मैंने कवर किए. तो वो आप अच्छे से जाके देख लेना. ठीक है. सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट अगेन बिकॉज वी आल्सो हैव अ लैक ऑफ टाइम. तो एयर यहाँ पे हो गया, वाटर यू कैन गो थ्रू दोस वीडियोस. ठीक है. दिस विल हेल्प यू डेफिनेटली एंड इट इज अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ यू. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस मलेरिया इंडिकेटर्स. अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आया? सो फार सो गुड, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग वेल? समझ में आ रहा है? My speed is fine, I hope.
my speed is fine, right? I'm not fast that much. थोड़ा सा quick हूँ मैं, I know, because we have a lot to cover. और सारा टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल वे में ही कवर कर रहा हूँ, so that we do not miss on anything. We do not miss on anything. Everything is crystal clear. Good, Nas. Okay. Now, just giving you 1 minute 38 पे स्टार्ट करेंगे. फटाफट देख लो क्या क्या मैंने आपको बताया है, फटाफट देख लो. Then we will start with this malaria indicators. उससे भी क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, will revise them. Okay, so these are our टॉपिक सेक्शन के जो स्लाइड्स थे, मैंने डायरेक्टली उनको यूज किया है, सो दैट आपको भी याद है, हाँ ये तो टॉपिक सेक्शन में भी था, इसी तरीके से था, यही था. ठीक है. ओके, लेट्स गो फॉर दिस malaria indicators. So first of all, if they ask you question on this, okay, which parameter tells you about burden of malaria, or we can say morbidity due to malaria. So you have to remember it is my PCR. PCR means proportional case rate. Proportional case rate means out of 100 patient of hospital, how many had malaria? So if they ask you which parameter tells you about burden of malaria, please remember that is proportional case rate. Okay. Next question, if they ask you about infant parasite rate, that is IPR, infant parasite rate. It tells about recent transmission of malaria. अच्छा, recent transmission of malaria से अगर पूछेंगे तो मुझे याद रखना है infant parasite rate. If they ask you about best indicator of malaria contact, if they ask you best indicator of malaria contact, I have to remember this API. Also, this API tells about impact and incidence of मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम. तो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का इम्पैक्ट कितना हुआ, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम का इम्पैक्ट कितना हुआ, एज वेल एज इंसिडेंस के बारे में कौन बताता है, एपीआई. अच्छा, एपीआई क्या होता है, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस रेट. द वर्ड सेइंग इंसिडेंस रेट, तो ऑब्वियसली इंसिडेंस के बारे में तो बताएगा ही बताएगा, साथ साथ में ऑब्वियस इंसिडेंस में न्यू केसेस, अगर प्रोग्राम अच्छा चलेगा ऑब्वियसली न्यू केसेस में ड्रॉप आएगा. सो दैट्स व्हाई also this API also tells about this impact of malaria program, and this API is the best indicator of malaria contact. ठीक है. तो एक तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है. they will definitely ask you what is this I in API. Please guys remember, I means incidence rate. अच्छा, एपीआई क्या होता है, एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस रेट. इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज रिमेंबर, दिस इज द नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस ऑफ मलेरिया बाय टोटल पॉपुलेशन. यानी आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने केसेस कंफर्म्ड है मलेरिया के, into 1000 इक्वल्स माय एपीआई. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एज अ फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन इस फॉर्मूले को रिपीट करेगा, शीतल प्लीज रिपीट दिस फॉर मी. दिस एनुअल पैरासाइट इंडेक्स पूरा रिपीट कर दो यहाँ तक. Okay, so annual parasite incidence rate formula is number of confirmed case of malaria divided by total population into 1000. It is the best indicator of malaria contact. API tells incidence and impact of malaria control program. Good. Next question they will ask you, acha, if API is more than 1 by 1000, then you have to remember that state belongs to intensive control phase, or that area belong to intensive control phase. This is very 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 important. It is not 1 by 10,000, it is 1 by 1000. This is what you have to remember. Okay. Now, best indicator of rational effect of this malaria, please remember, this is your annual blood examination rate. And best indicator of this atomicity is spleen rate. This you have to just rectify
but these are already PYQs, that's why I have included over here. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Next we will be studying about this anemia mukta bharat. Anemia mukta bharat, I'm assuming you already know about anemia mukta bharat, but yes, at the same time ये थोड़ा सा volatile हो जाता है because we have 19 subjects to carry, right? So let's talk about this anemia mukta bharat. Anemia mukta bharat program में आपको ये याद रखना है कि main aim क्या था. This is a visual question as a logo. You have to remember 1 2 3, just a second, 1 2 3 4 5 6. What does this mean? 5 6 यानी कि स्ट्रेटेजी 6 into 6 into 6. ठीक है, तो 6 into 6 का मतलब क्या है? 6 बेनिफिशियरीज, 6 इंटरवेंशंस एंड 6 institutional mechanism. This is what you have to remember. Also please remember over here that इसका मेन एम क्या था? टू रिड्यूस प्रिवेलेंस बाय 3% per year. 3% per year. This is my aim. First thing. Next we have to remember this. आयरन का कितना डोज होता है, फॉलिक एसिड का कितना डोज होता है, फ्रीक्वेंसी एंड कलर. वेरी 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 हाईली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस बेनिफिशियरीज 1 2 3 4 5 6. ठीक है, फर्स्ट बेनिफिशियरी फ्रॉम 6 मंथ टू 59 मंथ चाइल्ड. तो यानी कि दो बेनिफिशियरी मेरी चाइल्ड रहेंगे. वन विल बी एडोलसेंट्स. ओवर हियर आल्सो रिप्रोडक्टिव एज फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल, लैक्टेटिंग फीमेल. फर्स्ट टू चाइल्ड के बारे में बात करेंगे. फ्रॉम 6 to 59 मंथ चाइल्ड माय आयरन का लेवल कितना होगा? 20. सो द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम 2020 milligram per day, and for 5 to 9 years child you remember it is 45. So just double this around 20 का डबल 40. लेट्स टेक इट 45. तो ये 45 mg per day हो जाएगा. इन 6 to 59 मंथ ऑफ ऑब्वियसली मेरा फॉलिक एसिड कितना होगा मेरा फॉलिक एसिड होगा, इट विल बी अराउंड 100 माइक्रोग्राम पर डे. एंड फ्रीक्वेंसी चाइल्ड, छोटा सा बच्चा है, बी फॉर बच्चा, बी फॉर बाई वीकली, यानी हफ्ते में 2 बार देना है. एंड ऑब्वियसली सिरप देंगे, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. ठीक है, 5 to 9 ईयर चाइल्ड के लिए हम क्या याद रखेंगे? इसका डबल हमने याद किया था, 20 का डबल 40. लेट्स टेक इट 45 mg पर डे. and folic acid will be 400 microgram per day, and it will be weekly and pink tablets. Obviously 5 to 9 year children, either it is a boy or girl, पिंक कलर उनको अच्छा लगेगा. सो ऑब्वियसली पिंक टेबलेट. तो यहां से हमको क्या कैरी फॉरवर्ड करके जाना है? इफ आई रिमेम्बर दिस वीकली, ऑब्वियसली वीकली. इफ आई रिमेम्बर दिस 400, it will be next 500 500 500 500. ठीक है. So if I compare from 10 to 19 year adolescents, 10 to 19 year adolescents, my iron will be 60. 20 to 49 reproductive age female के लिए क्या होगा? 60 milligram per day. लेकिन folic acid 500, folic acid 500, frequency weekly. तो मतलब एडोलसेंट्स जो 10 to 19 ईयर्स का था और 20 से 49 ईयर रिप्रोडक्टिव एज की जो फीमेल थी, उसमें आयरन, फॉलिक एसिड और फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम है. तो डिफरेंस कहाँ है? प्लीज रिमेंबर, एडोलसेंट्स लाइक ब्लू दैट इज ब्लू टेबलेट, एंड 20 to 49 रिप्रोडक्टिव एज रेड टेबलेट. फॉर प्रेग्नेंट फीमेल, फॉर लैक्टेटिंग फीमेल 60 सब कुछ कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, लैक्टेटिंग फीमेल एंड प्रेग्नेंट फीमेल फॉलिक एसिड 500. तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? in the frequency. Pregnant female daily, lactating female also daily. And also from pregnant female, lactating female, red tablet. This is what you have to remember. समझ में आया कैसे इनको याद रखना है? Hope you got it. I want a verbal response from each one of you. You got this? How I have to remember? Very very easy. If you will follow this way, you will not do anything wrong in this. ठीक है, you will not do anything mistake in this. समझ में आया आप लोगों को? अन्वेषा, आशीष, समझ में आया? या गुड. Should I move forward? Just giving you 30 seconds to a quick review. फटाफट देख लो डिफरेंस कहाँ कहाँ है.
Okay. Next, I would like to discuss about this nutrition, this national nutrition mission. That is, now it's called Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan. That is your Shahi Poshan Desh Roshan. What we have to remember over here, to make India malnutrition free by 2022. To make India malnutrition free by 2022, it covers 4 diseases which are targeted. तो कैसे याद रखेंगे? From this SULA. S for stunting, U for undernutrition, L for low birth weight, A for anemia. देखो एनीमिया के लिए तो we have this anemia मुक्त भारत, and what are aim to decrease the prevalence by 2%, stunting का, under nutrition का भी 2%, and also LBW, this low birth weight 2%. What you have to remember over here, anemia 3%. देखो if you compare from over here, हमने यहाँ पे भी क्या लिखा था, main aim is to reduce the prevalence by 3% per year, 3% per year. ठीक है, this is what you have to remember for our exam. ठीक है, अगर वो पूछते हैं तो please remember that this पोषण अभियान जो है वो कितने डिजीज को टारगेट कर रहा था, स्टंटिंग, अंडरवेट, लो बर्थ वेट एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस मेडिकल एंटोमोलॉजी. ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 हाई यील्डिंग, you have to remember this table. You can expect at least one question in this session of FMG January 2025. You can expect one question on this. ठीक है, so please remember we have this Anopheles, Culex, Aedes and Mansonia diseases they are covering. Please remember Anopheles causes the vector usually the malaria, मतलब मलेरिया का जो वेक्टर है दिस इज एनोफिलस, एंड प्लीज रिमेंबर डिजीज causes malaria is this anopheles is also called as sophisticated malaria. Why sophisticated mosquito? Why? Because breeding is usually in the clean water, और इसके जो eggs है it is usually boat shaped, that is lateral floats. and larva में मुझे याद रखना है, I have to remember this is my water surface, and this larva is actually resting parallel to this water surface. How? They do not have siphon tube. This is what you have to remember. If I talk about this adult कैसा रहेगा, you have to remember this black spots and also this 45-degree angle. अच्छा, 45-degree angle क्या है? Please remember this mosquito actually rest at the skin at 45 degrees Celsius. I hope you already know about this, and these are your black spots at the margin of the wings. So this is Anopheles. As a visual question they can ask you, very 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 important. Next, if I talk about this, if I ask about this Culex में आपको याद रखना है, it can cause like Japanese encephalitis, this lymphatic filariasis, West Nile fever. This is what you have to remember. And this Culex is also called as nuisance mosquito. Also please remember breeding is usually in dirty water. Eggs के बारे में हमको इतना information नहीं जानना है. You have to remember about larvae rest and angle at water surface. Why? Because they have this siphon tube. Please remember, very very important. So they rest an angle to the water surface. And if I say about this adult, so please remember this hunch, or we can say a band-aid around the neck. So you can see this band-aid around the neck. This is what you have to remember related to Culex. About Aedes के लिए याद रखना, diseases they can cause is like this: dengue, chikungunya fever, yellow fever, Zika virus, and this Rift Valley fever. And this Aedes mosquito is also called as this tiger mosquito. Breeding के लिए याद रखना है artificial collection of rainwater. Very 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 important. So for breeding, if they ask you about Aedes, please remember artificial collection of rainwater. And larva के लिए same होगा कि these also rest an angle to the water surface. Why? Because they have siphon tube, and also they have this hunch. But why this is called as this tiger mosquito? I hope you already know that. White strips on this body and leg. Very 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 important. Flight range usually कितना होता है? 100 meter. And also please remember this 400 meter Aedes free around the airport. I hope you already know about these things. Very 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 important. So this is my visual question. They usually rest parallel to the skin surface, and this is your white and leg, body and legs. This is what you have to remember. Next, you have to remember about Mansonia. This usually causes this
ब्रूगेन फाइलेरियासिस एंड ऑल्सो चिकनगुनिया फीवर। अच्छा, चिकनगुनिया फीवर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बट इफ दे आस्क यू, प्लीज रिमेंबर we have to focus on Aedes will be preferred. And if they ask you about breeding, they breed on this aquatic plant, and this aquatic plant can also be over connected over here तो larva जो होता है, larva is attached on the roots of this aquatic plant, so you can see larva is attached on this roots of this aquatic plant, ठीक है। and this is what you have to remember related to this मेडिकल एंटोमोलॉजी में हमको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी दे कैन गिव यू दिस विजुअल क्वेश्चन, वन लाइनर और मे बी क्लिनिकल सिनेरियो, ठीक है। मेडिकल एंटोमोलॉजी में एनोफिलस, क्यूलेक्स, एडिस, मेंसोनिया, समझ में आया आप लोगों को? आई वांट अ रिस्पांस, समझ में आया? Yes. Yes, भैया। गुड गुड गुड। नेक्स्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस मस्किटो कंट्रोल। मस्किटो कंट्रोल के लिए आपको याद रखना है which methods we have for this mosquito control. So we have this physical method, we have this chemical method, also we have biological method. अच्छा, आज मुझे पता चला कि मॉस्किटो कंट्रोल के लिए आई हैव थ्री मेथड्स, आई हैव दिस फिजिकल मेथड, आई हैव दिस केमिकल मेथड, आई हैव दिस बायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में व्हाट आई हैव टू रिमेंबर दैट बेस्ट इज source reduction. Why? Because this is something a primordial level का prevention of है, level of prevention है, and best is my source reduction. Also I can use this mosquito nets also I can use. What you have to remember that size of the hole in mosquito net is कितने इंच का साइज होता है of this mosquito nets का, होल का साइज कितना होता है? आई वांट योर रिस्पॉन्स इन चैट सेक्शन, लिखो आप, याद रहेगा। हाँ, इट इज 0.0475 इंच, 0.0475 inch. If you write, you will remember it. Very 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 important, very very important. Good, everyone please respond. Yeah, good. Next, ऑल्सो प्लीज रिमेंबर कि पर स्क्वायर इंच में कितने होल्स होते हैं? मोर देन 150 होल्स पर स्क्वायर इंच, मोर देन 150 होल्स पर स्क्वायर इंच। दिस इज व्हाट आई हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट, वेरी वेरी हाईली, अभी इस बार भी पूछा था इन्होंने, they can ask you again about this chemical method. Chemical method में I have to remember this DDT, pyrethrum, this also malathion and this Paris green. पायरेथ्रम, मेलाथियन, पेरिस ग्रीन, डीडीटी। अच्छा, अब इसी में हम फर्दर ग्रुप को क्लासिफाई कर देते हैं ताकि हमको याद रखना इजी हो जाएगा। क्या कि वी हैव दिस केमिकल में वी हैव दिस एंटी एडल्ट एंड एंटी लार्वल। देखो, लार्वा के बाद में एडल्ट, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अच्छा, एंटी लार्वल भी ड्रग है और एंटी एडल्ट भी ड्रग है। एंटी एडल्ट में मेरे पास क्या है? डीडीटी, पायरेथ्रम एंड मेलाथियन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर आपसे पूछ लिया, they inhibit acetylcholinesterase means obviously acetylcholinesterase kind of मतलब neurotransmitter related, so this is something your, they act as a contact or nerve poison. This is what you have to remember, very 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 important. अच्छा, पेरिस ग्रीन के बारे में, एंटी लार्वल पेरिस ग्रीन, इट इज अ स्टमक पॉइजन, ठीक है। whatever they ask, this information you should remember very 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 highly, ठीक है। Next, if I ask you related to biological method, we have this Gambusia fish which have highest affinity for Anopheles larva. अच्छा, Anopheles larva के प्रति इनकी highest affinity होती है। Biological method Gambusia fish. This is what you have to remember. Very very important. ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? Yes, Should I sir. cover Yes, pneumoconiosis yes, also? sir. Should I cover pneumoconiosis also? Everyone is comfortable so far so good? Please let me know, अगर आप लोग बोलोगे तो pneumoconiosis भी मैं करवा दूंगा in this lecture. Yes, sir. Should I continue or we should plan next session for this? Whatever you guys say. Continue. Okay, good. Giving you guys 1 minute. We'll start at 7:57. 7:57 पे start करेंगे, फटाफट इसको रिवाइज करो. You can zoom it and you can revise it. Yeah, I will continue.
ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस न्यूमोकोनियोसिस। देखो, जो इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है, जो इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड होती है, आई हैव कलेक्टेड इन दिस सिंगल पीस ऑफ शीट या शीट, ठीक है, and we'll read this. Okay, so this is what you have to remember about pneumoconiosis. We have this silicosis, anthracosis, asbestosis, byssinosis, beganosis, and farmer's lung, bird fencer lung, composite lung, and citrosis, and also stenosis. So this is what you have to remember. ठीक है, इनके बारे में क्या क्या possible question आ सकते हैं, let's read about it. देखो, these are the screenshots, or we can say द कलेक्शन ऑफ आवर जो पीवाईटी ईवी के जो सेक्शन है उसमें ऑलरेडी पोस्टेड है, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड इट। तो सिलिकोसिस की अगर मैं बात करूं तो प्लीज प्लीज रिमेंबर सिलिकोसिस यूजुअली फ्रॉम दिस गोल्ड माइनस ऑक्यूपेशन। क्या क्या हो सकता है, प्लीज रिकलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन अगेन। गोल्ड माइनस, gold minus, also this bauxite minus, gold minus, bauxite minus, ठीक है। also remember cement industries and also this glass industrial workers। तो क्या क्या हमको ऑक्यूपेशन में याद रखना है अबाउट सिलिकोसिस, एक तो गोल्ड माइनस, बॉक्साइट माइनस, गोल्ड माइनस, बॉक्साइट माइनस, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज माय गोल्ड माइनस, बॉक्साइट माइनस। ऑल्सो रिमेंबर अबाउट सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। इफ दे आस्क यू मोस्ट कॉमन इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया, इट इज ऑल्सो सिलिकोसिस। सिलिकोसिस इज मोस्ट कॉमन इन इंडिया। If they ask you most common cause of disability, most common cause of death is also silicosis। तो सिलिकोसिस के रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन है ये सब यहाँ पे लिखे। Also, if anyone is suffering from this silicosis, please remember in chest X-ray you will see this snowstorm appearance, and this usually silicosis is associated with TB, associated with TB। तो ये this is associated with TB। तो this is what you have to remember। तो सिलिकोसिस के रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वी हैव कवर्ड ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई ओवर दिस एंथ्राकोसिस, देखो एंथ्राकोसिस में क्या है रखना है, एंथ्राकोसिस यूजुअली एसोसिएटेड विद दिस कोल माइनस। कोल माइनस के लिए एसोसिएटेड है। व्हाई दिस एंथ्राकोसिस, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कोल डस्ट, कोल डस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट पार्ट, इट इज प्रोग्रेसिव massive fibrosis, it causes progressive massive fibrosis। very 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 high link point। next, about asbestosis, please remember about asbestosis that asbestosis is usually कौन सा occupation में, in shipyard worker, shipyard worker, also in cement industry worker। अच्छा, अभी जस्ट हमने सीमेंट इंडस्ट्री वर्कर सिलिकोसिस में भी पढ़ा और एस्बेस्टोसिस में भी, बट आई हैव टू प्रेफर सिलिकोसिस। सिलिकोसिस अगर ऑप्शन में सिलिकोसिस है just go for it, but if it is not there for the cement industrial worker, then I have to go for this asbestosis, asbestosis, ठीक है। also this asbestosis is associated with this mesothelioma and lung cancer, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन हमारे पक्के। whatever they ask you, whatever they ask you related to pneumoconiosis, the information is usually from this only, from this only, ठीक है। ये तीन हमारा अगर क्लियर हुआ, नेक्स्ट थ्री हम पढ़ते हैं, that is बिसिनोसिस, बेगासोसिस एंड दिस फार्मर्स लंग। अच्छा, बिसिनोसिस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं अबाउट बिसिनोसिस, दे विल आस्क यू about industry, textile worker industry, textile worker industry, or we can say cotton industries। next, usually this Monday chest tightness, Monday chest tightness is usually in this bicynosis, bicynosis, most common seen in spinners, spinners, please remember it is not weavers। देखो, it is not seen in weavers, it is most commonly seen in spinners, spinners, ठीक है। very 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 important about Beganosis, Beganosis, please remember, Beganosis is not because of sugar, not because of sugar. This Beganosis is because of this bagasse or this molasses. This is what you have to remember। Acha. Also remember, it is not because of sugar, or it is not because of sugar cane. It is because of this bagasse or this molasses। जब शुगर को डेवलप, जब शुगर बनती है इन दिस शुगर मिल वर्कर्स, इन दिस शुगर इंडस्ट्री, जब शुगर की प्रोसेस होती है, ड्यूरिंग दैट दिस बेगेसी इज देयर और मोलेसिस दैट कॉजेस दिस बेगोसिस। दिस इज व्हाट यू रिमेंबर। और अगर ऑप्शन में कुछ भी नहीं गिवन, इफ दे आर गिविंग दिस ऑप्शन एज शुगर कैन, देन यू कैन पुट दिस शुगर कैन, बट द करेक्ट द प्रॉपर आंसर इज योर दिस बेगेसी और मोलेसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इफ दे आस्क यू अबाउट ऑक्यूपेशन, इट इज शुगर मिल वर्कर, शुगर मिल वर्कर। if
दे आस्क यू कि बेगोसिस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन कंट्रोल दिस बेगोसिस. प्लीज रिमेंबर दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस 2%. It is not 20%. It is 2% propionic acid spray. 2% propionic acid spray. Everyone write in the chat section. Begosis can be controlled by. Begosis can be controlled by. Begosis can be controlled by 2% propionic acid spray. 2% propionic acid spray. This is what you have to remember. Very, very highly information. Also, which microorganisms is usually isolated in this begososis? Please remember it is thermoactinomyces saccharide. देखो saccharide sugar. This is how you can remember. So thermoactinomyces saccharide. Also please related. Also please remember this information related to farmer's lung. Farmer's lungs के लिए हमको क्या क्या information याद रखनी है? Farmer lungs is usually because of this moldy hair, and also which microorganism can be isolated in this? It is micropolyspora fena. Micropolyspora feni. This is what you have to remember. Micropolyspora feni. This is what I have to remember. Bird fancial lung. Please remember this is by these bird droppings. इसमें इतना कुछ याद करने का नहीं है. So don't get confused. Composite lung में मुझे क्या याद रखना है? About composite lung, it is due to this compost. This is what you have to remember. This compost is due to compost. Microorganisms which can be isolated, aspergillus. Aspergillus, very, very, very high link. Sidrosis due to iron. Iron. And stenosis, that is your tin, or this tin is also called as this sternum. Sternum. This tin is also called as sternum. ठीक है. ये तो हुआ हमारे क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं. अब इसी में ही लेट्स कंसिडर वन मोर इंफॉर्मेशन. इफ दे आस्क यू व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइबल pneumoconiosis, notifiable pneumoconiosis. So this is what you have to remember. Notifiable disease are silicosis, anthracosis, asbestosis, bichinosis. Silicosis, anthracosis, asbestosis, bichinosis. Please remember notifiable pneumoconiosis में Begasos, this Begasosis is not, it is bichinosis. Bichinosis, very, very, very important. Please remember it is not bag, it is by. ठीक है. Bichinosis याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. और bichinosis के लिए most common seen in spinners, not weavers. That is also a hiding information. ठीक है. एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, and also they can ask question related to this isolated microorganisms. यहाँ से question they can ask you this and also this which already written as a Q. तो ये information आपको miss नहीं करनी है. ठीक है. So this is from our topic section PYTV, previous year topic in extended version. ठीक है. Next we have to remember about primary health care definition. तो ये सबको समझ में आया? About pneumoconiosis सबको clear हुआ? Good. Okay. Nice. Next question we have to remember about primary health care. देखो, so this is the best part of this series. ये जो हम LMT सेशन के फॉर्म में ले रहे हैं, इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि हम पहले किसी और चैप्टर के कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे थे. अब जैसे न्यूमोकोनियोसिस से डायरेक्टली वी हैव स्विच्ड ऑन दिस प्राइमरी हेल्थ केयर. तो क्या है ना, जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं जो इस टाइम पूछ सकते हैं फ्रॉम फॉर दिस सेशन वी आर कवरिंग इन दिस वे. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट. तो अभी हम न्यूमोकोनियोसिस में थे, नाउ तुरंत वी हैव स्विच्ड टू दिस primary health care. Primary health care. For this primary health care, first question they can ask you related to this definition, that this primary health care की definition कहाँ दी थी? It was given at Alma Ata in 1978. 1978. What do you have to remember? Essential health care के 4 A's होते हैं. There are 4 A's for this essential health care. This health care should be acceptable, accessible, available and affordable. It should be acceptable, it should be accessible, available, accessible and available and affordable. This is what you have to remember 4 A's. If they ask you primary health care के elements, primary health care के elements अगर वो आपसे पूछेंगे, then I have to remember this essential drugs. तो इसको हम याद कैसे करेंगे, this primary health care के elements के from the same mnemonic
that is elements. E for essential drugs, L for locally endemic disease के prevention and control. देखो essential drugs में like for example paracetamol आ गया, locally endemic disease का prevention and control में उस जो भी एरिया की जो भी एंडेमिक डिसीज है उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. ई फॉर एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन? ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन. एम फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. ई फॉर एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन, ई फॉर इम्यूनाइजेशन याद रख लेते हैं, ई फॉर immunization. So please remember primary health care also covers immunization. E for expanded program on usual immunization from I, but let's remember it from E for immunization. And for nutrition, so obviously nutrition related jitni bhi advices hoti hai that are also covered in this primary health care. T for treatment of common ailments, तो जितने भी cough and cold, तो जितने भी common ailments होते हैं उसका treatment. And S for safe water supply and sanitation. So this is what you have to remember. तो वो direct नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा they will give you the options in a language version. You have to crack that this particular is a element of primary health care. Very, very, very high yielding. Next question they will ask you on primary health care के principal pillars. Very, very, very important. Please remember E, just a second. ECAI. ED means equitable distribution. CP means community participation. AT means appropriate technology. IC means intersectoral coordination. देखो, please remember, very important. First is my equitable distribution. First principal pillar is equitable distribution. ठीक है, this is what you have to remember. यानी कि equality of services. This is what you have to remember. Next, about community participation. Community participation का example like ASHA. ASHA is an example of community participation. This is what you remember. Also, example like this Chinese barefoot doctors. These are not doctors, but these are rice farmers. So this is also good nahi, very good example of community participation like ASHA and Chinese barefoot doctors. Next, we have this appropriate technology. Appropriate technology means results are like expensive interventions. तो कुछ expensive interventions हम करते हैं, उनका result और इनका result is nearly same. Like for example, ORS, standpipe, exclusive breastfeeding, Shaki's tape. Also, increase of respiratory rate is usually for this diagnosis of pneumonia. Also, kangaroo mother care. Why? It is for prophylaxis of neonatal hypothermia in usually very, very important low birth weight. This has to be learned by you. It is low birth weight. Incomplete याद नहीं रखना है, complete याद रखना है. This is for the prophylaxis of neonatal hypothermia in low birth weight. And last but not least is intersectoral coordination. यानी दूसरे जो सेक्टर हैं वो भी आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें. So this is my equitable distribution. This is my community participation, appropriate technology, intersectoral coordination. So these are the 4 principal pillars of primary health care. This is what I have to remember. Next question they can ask you on this disaster cycle. Very, very, very important. देखो, you have to remember this cycle. Sequence आपको याद रखना है. सबसे पहले impact आएगा, ठीक है, उस impact के बाद हम रिस्पॉन्स करेंगे, राइट? एंड देन रिहेबिलिटेशन, देन रिकंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस. ठीक है, इसको मैंने हमारी जो समर पे बैच की क्लासेस हुई थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया था. आई एम जस्ट ओवर हियर जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया ऑन दिस डिजास्टर साइकिल. प्लीज रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to remember कि इसमें 6 stages है. इम्पैक्ट, रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, देन रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस. इसको 2 फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया है. फ्रॉम दिस रिस्पॉन्स से लेके रिकंस्ट्रक्शन, इट विल बी रिकवरी फेज आफ्टर अ डिजीज. So after a disaster, definitely they will ask you this 3R. They will ask you this 3R of this recovery phase after a disaster. I have to remember
and I have to remember over here 3R means R for response, RE that is rehabilitation, and R for my reconstruction. ठीक है, ये याद हुआ. उसके बाद you tell me this is a risk reduction phase. Risk reduction phase before a disaster. तो before a disaster risk reduction phase क्या होगा? This is my mitigation, this then preparedness. I hope disaster cycle पे भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा. Next question they can ask you in this blood spill. Blood spills very high yielding. Usually after a blood spill उन्होंने बताया है about large spill and small spill. देखो large spill, please remember it is usually you have to clean it by 10% hypochlorite. 10% hypochlorite, and for small blood spill it is 1% hypochlorite, means sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite, this is what you have to remember in a nutshell. ठीक है, so I hope कि जितनी information अभी हमने in this 1 hour cover करी है, this you have to revise it. I think you will be able to revise this in 15 minutes after this section, and then you are good to go. ठीक है, so that's where we will stop our session for today. Then क्योंकि there already a lot of information. चलो ठीक है, let poisoning भी complete कर लें. Let poisoning भी complete कर लें. What do you say guys? जैसा आप लोग बोलो. हाँ भैया कर लो, लेट पहुंचेंगे तो अच्छा होगा. चलो ठीक है, लेट पॉइजनिंग भी कर देते हैं. ओके ग्रेट. इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल लेट्स गो फॉर दिस. ठीक है, देखो लेट पॉइजनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन पेंटर्स. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटर्स कॉलिक. आल्सो यू कैन कॉल इट एज अ सेट्यूनरिज्म. ठीक है, मोस्ट कॉमन सोर्स पेट्रोल और गैसोलीन इज द मोस्ट कॉमन सोर्स, लाइक यूजुअली फ्रॉम द व्हीकल के फ्यूम्स से होता है. ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मोड ऑब्वियसली फ्यूम्स, इनहेलेशन, सिंपल. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपको याद रखना है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक लेड, ऑर्गेनिक लेड. ठीक है, इनऑर्गेनिक लेड में व्हाट कैन बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन? बर्टोनियन लाइन, पैलर कौन सा? पेरी ओरल पैलर. बर्टोनियन लाइन क्या वो टीथ पे होती है? नॉट एट ऑल. बर्टोनियन लाइन और इन द gums. So these are Bartonian line. B for Bartonian, B for blue. This is what you have to remember. Why? It is because of the deposition of this PBS. Very important. Next, पैलर की क्या बात करी? पेरी ओरल पैलर means it is the first sign as well as most consistent. का मतलब क्या होता है कि अगर लेड पॉइजनिंग हुई तो ये तो होगा ही. कौन सा? पेरिओरल पैलर. दिस इज व्हाट आई हैव टू रिमेंबर. तो फर्स्ट साइन अगर आपसे पूछे, मोस्ट कंसिस्टेंट आपसे पूछे, पैलर. देन इनऑर्गेनिक लेड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में वी हैव दिस कॉलिक. आल्सो आई हैव दिस रिस्ट और फुट ड्रॉप. रिस्ट और फुट ड्रॉप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग नर्व्स और वी कैन से शॉर्ट नर्व. इफ दे आस्क यू, लॉन्ग नर्व्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन शॉर्ट नर्व. ये हुआ मेरा. Next, you have to remember about this organic lead. Organic lead में encephalopathy very important. You can mark a lot of star over this. Encephalopathy for organic lead. अच्छा, screening पे, if the patient is coming to you with all of this clinical presentation, what I'll go for screening? CPU means coproporphyrin in urine. Diagnosis के लिए I will go for this aminolevulinic acid in the urine, and also lead levels in the blood. Obviously lead poisoning होगी तो lead level मिलेगा. Also मुझे ALAU, that is aminolevulinic acid in the urine. Also अगर blood में है तो urine में भी मिलेगा. Drug of choice, I know you already remember this. EDTA, also EDTA plus dimercaprol, and also penicillamine. Very important. And for prognosis, I will go for this peripheral blood smear. में I will go for this, or I will look for this RBC basophilic stippling. देखो RBC basophilic stippling का मतलब ये होता है कि RBC ब्लू दिखने लगी है. It doesn't mean कि basophils इसमें आ गए. Basophils are literally normal. This is just basophilic stippling. Also, you will see this microcytic hypochromic anemia. So this is something your wrist drop. This is your this peripheral blood smear में RBC stippling.
RBC basophilic sibling, and this is my Bertonian line. Very, very important. Next question you have to remember, alternate system of medicine is Ayush. Ayush is the alternate system of medicine. A for Ayurveda, Y for yoga and naturopathy, U for Unani, S for Siddha, H for homeopathy. Very, very important. This is the logo for Ayush. Very, very important. So A for Ayurveda, Y for yoga and naturopathy, U for Unani, S for Siddha, H for homeopathy. Very, very important. Please, please remember this Ayurveda and yoga, naturopathy and Siddha are usually Indian origin. Indian origin. This is what you have to remember. Next, if I talk about Asha, Asha. First of all, Asha is usually age group. क्या होगा आशा का? 25 to 45 year. 25 to 45 year will be age group for Asha. Usually a female, residents of the same village. Residents of the same village. Please, please remember Asha का full form याद रखना. Accredited social health activist. It is usually selected by this village panchayat, gram sabha. Very, very important. Next, accountable to village panchayat, trained by this आंगनवाड़ी worker and also this and auxiliary nurse midwife से train की जाती है. Also this आशा act as a bridge between village and ANM के बीच में bridge बना. Very, very, very important. Please they can ask you this time. And next, very highly, this impact indicator of आशा कि आशा अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है. That impact indicator will be best, will be decrease in IMR. Decrease in IMR is the best. Next, if they ask you TB cases detected data, उस साल में कितने TB के केस डिटेक्ट करें, leprosy cases and malnutrition rates. This will help us to give a impact indicator of ASHA. Please remember, so this is your National Rural Health Mission and key worker is ASHA, and this is under this National Health Mission. If this is about USHA, please remember USHA means urban social health activities, and it is usually 1 out of 10,000, or we can say out of 1,000 to 2,500. Very, very important about USHA. This is where we complete our this page as told by हेमंत सिंह. ठीक है, so this is where we finish. समझ में आया आप लोगों को? I want a verbal response from you guys. You guys are doing amazing. आप लोगों ने अच्छे से रिप्लाई भी दिया. Yes, yeah. समझ Yes, में आया sir. आप लोगों को? बस इसका थोड़ा Yes, PDF sir. जल्दी भेज दीजिएगा तो हम रिवाइज कर लेंगे और लोग इसको. PDF is already shared in the topic section. PDF is already shared in the topic section as well as in the Samarpit batch. Samarpit batch में इसका PDF it will be available till the exam, and in topic section this Samarpit जो हमारा बूस्टर से इसका जो टॉपिक सेक्शन है उसमें ये PDF जब तक ये लेक्चर्स चलेंगे तब तक अवेलेबल रहेगी. ठीक है, so thank you so much and have a nice day. From next session we will start on from this section. ठीक है, so all the best for studies. Thank you so much. अगर आपको कुछ भी डाउट हो you can DM me after this session. Thank you.